People wanted to go for foreign studies. And as you know, foreign studies, there are two ways. Either you have money, you qualify TOEFL or IELTS, you can go, or you can apply GRE, take a scholarship and go. But there is other option also. Without GRE also you can go. There are some countries like Taiwan, like South Korea, like Israel, like Belgium, like Singapore. They are taking students from India in a merit basis and quality basis, and they are giving scholarship also. And these are all countries who are highly technologically advanced, and they are doing well. So that also option is there with you. Though you want to go for foreign study, that option is there. By taking scholarship, you can go, or the students who have money can spend and go. And as you know, after doing course in abroad courses, particularly in America or Germany, you know, Germany, if you go for higher education, very less expenditure because most of the course fees are free in Germany courses. So there is different avenue. Although for COVID, all these things are now means not much. People are not taking much interest, but ultimately it will come maybe after 6-7 months. Again, it will boom. Again, the students will go. So that is another option for higher education, going abroad studies. Now, particularly coming to job, if you come to job, means after +3, you will definitely get a job. So in that case, the important is two things. One is in which job you are applying. Are you really skilled? Are you having knowledge? Another is, are you able to express yourself properly? Means your speaking ability, your personality, how you are expressing yourself, and skill in that area. If these two things you have, you will definitely means be selected for that job, and you can have a good career. So that in that aspects, Dr. Asok will speak better how to means how will ready for the career. Because he is working on that. And for job market is post-COVID is large job market, and industries are looking for good students. So please means as per your capability, as per your eligibility, as per your career, you can choose. And as I told you before, that there are many organizations giving free training. After that, they will give you a job, and after getting job, you can pay their training fee in EMI from your salary. It is also there. And if you are rightly you are talented, if you are expressible, if you have knowledge, you can directly get the job. And as you know, nowadays there are a huge number of job portal, huge number. One job portal, there are thousands of industry. You can apply and you can click that. So it is there. And when if you go again, detailed discussion in a job thing, so you can show in a PPT, we can show you the job portal, and it can be done. So job is booming. You can choose, and particularly if you see BFSI sector, banking, financial service sector, there is the market is booming in COVID scenario. Health sector, the most booming market, because anybody is on health sector will definitely get a job. There is no question at all. Agriculture is increasing like anything, because we are using advanced technique for the agriculture. Dr. Natava Rao will speak on agriculture, and we are using artificial intelligence in agriculture. We are using sensors in agriculture for better. And retail also is a very good scope. Particularly defense technology nowadays, it is growing like anything. Shipbuilding technology, defense technology, your cyber security, cyber forensic, digital forensic, and if you see slight technical background, construction sector is booming nowadays, and electrical vehicle is the call of the day. If electrical vehicle, battery technology, charging infrastructure, these are all the call of the day. Anybody will do this course, maybe 1-year course, maybe certificate course, maybe diploma course, maybe anything. You will definitely get a job, because you know, means now after 25, entire world will be electrical vehicle. Everywhere you need charging infrastructure, everywhere you need battery technology. So this is booming. Solar technology, you know, it is already there since 10 years, and it will be always there. So these are, if you take the technical aspects. And IT, you know, everybody want to read computer science and engineering, everybody wanted to read
information technology, everybody want to read MCA because there are job opportunities. And it is ranged from 2 lakhs to 50 lakhs. So if it will be in BPO sector, or maybe networking sector, or maybe hardware sector, in this sector, and networking and hardware can be accepted by anybody. It may be art students, it may be commerce students, anybody can come to that sector. And getting job is easy in that sector. But salary is slightly low. But if there is a good data scientist, the salary may be 50 lakhs. The salary may be 40 lakhs, like that. So it depends on your skill in a particular sector. So these are, even if I can give an example of tourism sector also growing, it will grow now because in COVID scenario slightly down, but now it will grow like anything. Now another thing here I can add with the higher education, because mixing both the things I'm mixing, dual degree concepts. Now in some universities there is a concepts you'll read 5 years only. Right from 4th year, dual degree will start. Means I'm giving an example. BTech plus MBA, BTech plus MTech, or BSc plus MSc, all kind of things. Now how we'll do? Because suppose we are integrated with a foreign university, abroad university, say city university, or any other good university. So what we'll do, right from your final year, courses will started in your present university, and there will be some virtual classes, and only the fifth year you'll go to the abroad and you'll read there, and you'll get 2 degrees. A degree, suppose if it is BTech, we'll get BTech from the parent university and master degree from the abroad university. This facility also there. So dual degree system is a nice system nowadays. So you can accept that. And another dual degree is, suppose you are going for an industry integrated program. In an industry integrated, say in case of IBM, in case of Microsoft, what they are doing, enter 4 year, you will read with your university, maybe say 50 papers. So university can take care of 35 papers. The rest 15 papers taken care by the leading industry like IBM, or maybe Microsoft, maybe Amazon, maybe many other organizations are doing that. And at the end of your courses, you will get 2 degrees. 1 degree from the university, another degree, graduation batch from the industry. So that through that graduation batch, you can touch huge number of job portal and you will get a job. So that is a important thing for the industry integrated programs. And now, the third verticals, Dilip Mate Koidava, that time over. And third that I already told you, startup eco-culture. Now, Dr. Satpathy, yes. Sorry to interrupt you. Yeah. As we had mentioned and request you earlier, so we'll go by the time. So other things, what you want to share with our student participants at the time of our interactive session, you can also share. So now we can, you please wind up your discussion in another 1 or 2 minutes. And after that, we'll go to Dr. Ashok Sahu and we'll listen him. And accordingly, at the end, when we'll go for our interactive session, when the questions will be asked by the students, participants, at that time, whatever innovative things you have in your mind to share with the students, we can share, so that by this way, we can also share the time for the interest of our students. Definitely. Sorry for the interruption. No. It should be very clear. Nothing else. So now the last particle as I discussed you, startup eco-culture. As you know, startup eco-culture means the universities, the premier organizations who have a startup eco-culture in their organizations, they have an incubation center. So what is that? If you have any innovative idea in your mind, I'm giving an example. Suppose, as you know, earlier, a electrical fan is of 70 to 80 watts. And consequently, BLDC motor came, brushless DC motor. And the wattage reduced to 28 watt. And as per the volume, 7, 14, 21, 28 watt. So that is most popular in the
means in entire pan India, and many are using bale distributor fan and to save energy. But if innovative idea means somebody can think that instead of 28, I can make it 20 watt. Then it is again a new concept. You can have that idea, you can have prototype, you can have startup, and you can grow like anything. So like that, he may be a science student, he may be art student, he may be any students. Innovation is everybody's mind. So that is the call of the means government of India, government of Odisha. They're all having innovative idea. They may not have money, they may not have everything. If they have idea, they can come for a startup agriculture. They can choose the right organizations, go to the incubation center, take government helps, take government fund, and they can have their own industry. So it is quite possible, and it is happening. Many are doing. So that is the thing. All three vertical I have talked. Many things I have there, but because time is very short. As Professor Upendra Padiji told that we'll discuss in your interaction. So I'm looking for that. Thank you. All have a great day. Thank you, Dr. Ravi Satpathy. Thank you so much. Ebe Dr. Satpathy जो कथा गुड़ा को कहिले सेतिरे से निर्दिष्ट भाव रे केतोटी स्ट्रीम रो केतोटी जिंस कथा कहिले MBAs भी भलो पढिकरी 10 to 12 lakhs की 20 lakhs की 40 lakhs पैकेज रे भी रही परिबे बट गोटे जिंस होची जे सब तक MBA स्टूडेंट 20-25 लाख टका पांते So the crux is जहाँ भी पढ़िबा जदि भलो पढ़िबा जदि भलो करिबा सेते फ्यूचर अछि जने MBA करिके जदि भलो करि पारुची जने सिंपल ग्रेजुएट आर्ट्स ग्रेजुएट हेकि सिविल्स पे प्रिपेयर करे IAS अफसर भी हे परिबा तो देयर आर एग्जांपल्स जेमति हमर पर आपण माने भितरु अनेक तो जानिथिबे किछ जानि भी नथिबे ओडिया रे पोस्ट ग्रेजुएशन करी IAS अफसर भी ओडिसा रे हेचंती उर्दू रे मास्टर्स करिके भी IAS अफसर हेचंती संस्कृत रे पंडित हेकि भी IAS अफसर हेचंती तो जरूरी नुहे जे जने जति अधिका मार्क रखि साइंस पढिबो तापर इंजीनियरिंग पढिबो तापर मेडिकल पढिबो आ एंट्रेंस ता पाइले ता भाग्य खुली जीवो आ जे न पाइले ताको भाग्य खोलिबो नाही सेमति किछ नाही देयर आर मेनी रिसोर्सेस जो माने इंजीनियरिंग मेडिकल न पाइले +2 करे से माने होता +3 पर सिविल्स पाई परंती बैंक पीओ पाई परंती डबल इंश्योरेंस ईयर पाई परंती आ जो माने एटा भी न पांती होता से माने लॉ करिकरी गोटे मजिस्ट्रेट ही पारंती जो माने ए समस्त वर्गर लोक मानन को नीति नियम शिक्षित को नीति नियम रे बांधी के रखिया क्षमता रखंती तेनु एबे दिना दिन होला गोटे हला कोविड परे परिस्थिति अलगा जायछि जीवन जापर अलगा जायछि जीवन बंचिबार सुडे अलगा जायछि किंतु जो डर थला जे कोविड परे नियुक्ति मिलिबाटा असुविधा हबो सेटा मिछ प्रमाणित होईछि कंपनी माने रियली भलो पिला खोजचंती जॉब मार्केट रे पिला भलो पिला मिलु नांती वर्तमान परिस्थिति से तेणु या उपरे मु डॉक्टर अशोक साहब को अनुरोध करी या उपरे किछ कहबे जे पोस्ट कोविड सिनेरियो रे परिस्थिति कोन अछि कोन ओपन अछि बाकी जोगडा को रेगुलर स्ट्रीम जने पीजी गले तापर एमफिल गले तापर पीएचडी गले जे नकला तेणु देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स जे जने स्वाधीन भाव रे किछ कर परिबे एनजीओ सेक्टर इज ए टू गुड सेक्टर सेथरे से किछ कर परिबे आत्मनियुक्ति कर परिबे जो माने आत्मनियुक्ति करूचंती सेटा केवल आत्मनियुक्ति शब्द रे ताको सीमित रखिबाटा ठीक होबनी कारण जे आत्मनियुक्ति होउची से आउरी 5-10 जन को नियुक्ति दउची निज पे भी नियुक्ति दाता आ समाज रे आउ 10 जन पे भी नियुक्ति दाता कुशली होंतु किबा अनकुशली होंतु तेनो ए जो व्हाट एल्स आउ कोन या ऊपर मु अनुरोध करिवे डॉक्टर अशोक साहू से तांकर मतामत देबे Thank you very much, Dilip Babu. And thank you very much, Mr. Padi, Professor Padi. And thank you, Dr. Satpathy, Professor Satpathy, for setting the trend. Very nicely, you have brought all those concepts of what is going to be there in the post-COVID scenario and what are the education prospects available, what are the service perspectives available for the students. Before I go, I just take a clue from Dilip Babu, and I will tell you one thing that maybe all of you might be knowing Albert Einstein. And Albert Einstein, who was Albert Einstein? Albert Einstein was a patent clerk only. And he has become a world-renowned scientist.
Likewise, Abraham Lincoln, what was he? What was Abraham Lincoln? He was the son of a poor farmer, and he became the president of USA, the strongest and the biggest country, USA. And you must have heard about Homer. He was a blind person, and he is a renowned writer. Likewise, Helen Keller, who was deaf, dumb, and blind. And you will be astonished to read his books and is throughout the world. Who is the person who doesn't know her? And like that, I will also take about the name of Mr. M.S. Oberoi. What was M.S. Oberoi? And what is he today? M.S. Oberoi was one of, as I know, he is in the beginning, he was appointed as a person to boil water for the resident of the hotel where these German people were staying, and he was giving hot water for them to how to take bath, and that was his job. And now you see he is having a chain of Oberoi Internationals throughout the world. So it's not that key what I am today and what I can't be tomorrow. If I am having a dream, then definitely I will reach the sky. I will tell one thing, that yes, if you have a dream or if you have a desire, have a dream for that desire, work dedicatedly, and get a direction from any of your senior, teacher, friends, and all these things, and be disciplined. Remember this 5D, my dear students. Desire, if you have a desire, have a big dream, work dedicatedly, get the direction from people, those who know the subject, whatever is your dream, and then finally have the discipline, direction and discipline. So before I go for all those things, what Mr. Dilip has told me, I will tell you one thing, how you are going to choose your career. Because right now, as rightly told by Mr. Satpathy, after the COVID scenario, things are different. So that we know that what are the jobs that are available in the market and what are the jobs that is not there. Likewise, whatever the job that the type of studies we have made 30 years back, perhaps that is going to be obsolete, and that job is no more there. That job is no more there now. So the thing is that whatever we are learning today might not be there for tomorrow. So the goal is for us is that it has to be nimble and skilled. You have to be skilled. You have to be skilled enough and make yourself future proof. Because at this in this COVID scenario, people have never knew that they have to work from home, and that needs a different talent altogether. That need a different talent altogether in each and every area. You have to be multi-skilled. You have to be very strong in your domain knowledge. You have to have leadership qualities. You have to be agile and all these things. So the thing is that you have to have you have to make yourself future-proof. That is very important. And then the key is that you must acquire skill throughout the life, like computer skill, communication skill, design skill, decision-making skill, all the life skills. There are 10 life skills are there, and you must acquire all the skills. So what I'm telling is that if you see right now, what are the future jobs? The future jobs are like cybersecurity, robotic engineering, software developer, data analyst, medical professions, IT system analyst, lawyers, and jobs related to construction, agriculture, textile, energy, all these things. The top 10 jobs for the future is robo manufacture and service.
raw material management, artificial intelligence scientists and big data, and artificial body makers. You might be finding nowadays that people are being replaced through robo. And then e-sport is another area where which is a future job. And then you also can think that there is a requirement of therapists, and that we are in fact we are giving some aspects about it when we are talking about neuro-linguistic programming. What are the therapies that are available for a better job market? Then gene designer for babies and pets, and then virtual wall designer. And I told you about cyber security, and then another thing is entertainment. So this has come in the in one of the website that I have seen, www.lux.com, which is very popular in this career yeah. So, and if you see the degrees for the future, that may be biology, chemical engineering, nursing, psychology, English language, economics, business, government or political science, communications, and computer science. So these are the areas where I think we need people right now. And I tell you another thing which Mr. Satpathy was also mentioning, that digital marketing is another area. Then PG diploma in management, then PG diploma in event management and activation. That was what Dilip ji was mentioning, that what is there is something which is hatke, which is not there in the regular stream. MBA, because everybody can't be specialist, and all the specialists cannot get everything what they desire. And then MTech, and then PG diploma in HRM, finance. These are all casual things. And another thing is that PG diploma in hotel management. That is another booming area, what Mr. Satpathy was also mobile. And mobile app development. This is, again, you can now see that everything is in mobile. And if you are having a area of interest to develop app, that will be fantastic for all of you. Then machine learning and diploma in computer application, then chartered accountancy, company secretary. Then another thing, another area, that stockbroker, that what Dilip ji was mentioning, that which is something out of the way. Stockbroker, then real estate management, retail management, lot many malls are coming. And then interior designing is another area. And of course, civil service is there, which Dilip ji was mentioning, that yes, a person who is done Odia or PG also can get civil, Sanskrit PG also can get civil service. So there is no bar, starting from anybody who has passed out graduation to post-graduation or engineering or law, anything can apply for civil service. I will now tell you one more thing, that how you are going to select your career. How, what is the criteria that, because lot many students, they depend that, yes, what my father and mother they desire, I will do. What my brother has done, that I will do. My friend has done this thing, that I will do. So I will tell you one thing, that how to choose your career. So for choosing your career, have your passion first. Have your passion. If you want to write down also, you can write down those who are there, because a lot of students are there, I was finding. And I must congratulate the organizers, that these the 199 people are still there, and it's a very good number. And you have passion, have interest, and what is your aptitude, what is the personality that you are having, and need to motivate yourself every day. Whatever you are doing, you motivate yourself every day. And
another important thing is that how to face failure, which has never been taught in any of the university, which has never been taught in any of the university. We teach maths, we teach history, we teach management, we teach everything, but how to face failure? Like you must have heard that the CEO of CCD, why he has what do you say, committed suicide? Why Sushant Singh Rajput has committed suicide? Because we have never learned how to face failure, and that is one thing I always tell that it is a must. And then your curiosity, what is your passion now, what curiosity you are having? And like in Japanese, they tell one thing, that is known as ikigai. There is a word known as ikigai, and if you can find out somewhere in the web, you can go through my students, my young friends, you can go through that. Choose a career that you love and where you are good at. Choose a career that you love and choose a career that you are good at, and what you can be paid for. It's not that loving only thing is that if I love and I join an NGO and my passion is that I want to serve people. Okay, serve it. Then that is not going to give you a big money. So if you want to have a big money, if you want to be paid for, do certain things. You have your passion, you have your love towards a certain year, and be good at that, but then still see that you are paid for that. And what the world needs, what is the need of the world. So these are the 4 things perhaps you can adopt while choosing a career. And I will tell one more thing, that what are the wrong reasons that you should not carry out, that why that there is a wrong reason which you should not adopt. Like number 1 is mark. If I am getting 100% in this, maybe I am very good. No, may not be. You may not be. So mark is not the right reason to select a career. That's if I want to be a science graduate, postgraduate science and all these things, if I am having math, a good mark in maths or chemistry or like that, so I should choose like that. It's the wrong thing. Influence of family and friends, that my family wants to me to be like this. You must have seen the movie 3 Idiots. What happened? Somebody wanted that his son should be an engineer, but the passion of that son was that he wanted to be a wildlife photographer. Then fancy and fictitious ideas. What you want? Somebody will tell that, yes, I want to go and be there in the film industry. So what are the things required to be there in the film industry? I was asking in a seminar also, one of the students, what is the goal of your life? One boy stood very smartly and he told that my goal of life is to see Amitabh Bachchan. So what is that you are gaining from that? What is that you are gaining? These are all fancy ideas. And don't go after money and fame. Money will come if you are successful. So these are the certain things that you should not choose your career because of that. And another thing what Dilip ji was telling, that if you I will tell you one thing, that one of my friend was there and his son was a mechanical engineer. And he was working in Coca-Cola. Few years after working in Coca-Cola 2 years, for 2 years, he was not having any interest in that. So what he decided to switch his job, and he joined Mahindra Automobile. And once he joined Mahindra Automobile, perhaps that was also not very, he didn't feel like working there also. Then what happened? He came and joined Sri Sri University for the 2 years yoga course. And I had called that boy. I asked him, "Arey, you have done like this. Tu evolia kolu to bapa ma tote gari dei nahanti. Tu mechanical engineer ru asiki yoga padilu." So she कहला, "Uncle, mate kuhantini, mu jaha gari khaichi mate kuhantini." Mu कहली, "Then why you have selected this?"
Well, uncle, because now yoga is everywhere. Everywhere. The world wants yoga. And my love, my passion is there. And I also get good money out of that. And the whole world is my destination. So you find such a thing. And so you have to have some, what do you say, ideas that is unique to you. That is unique to you. So after general BSc, whatever you want to do, BA, whether you are going for industrial chemistry, polymer chemistry, drug and dyes, operation research, environmental science, computer programming. So a lot of options are available for you. And then you can go to MBBS, you can go to homeopathic, bachelor in homeopathic medicine, bachelor in Ayurvedic medicine, veterinary science. Physiotherapy is one area where you can have lot of prospects. Physiotherapy is one area where you can have lot of prospects. Nuclear medicine is another area. Respiratory therapy and speech therapy, audiology. One of my known person is now setting up a what do you say, that is autism center in Mumbai. And now the work has started, and he wants a permanent person who is having passion for that, and who can work for another 10 years with him. Sahu, excuse me, this pardon, I think. I think it's already time, and I will complete this, and we will have it in the question answer session. Anything is there. So so you can go for the engineering line. You can go for the general profession line, you can go for the management line, and you can go for the law and other areas also. So thank you very much. And whatever else is there, I am surely I am available to answer you. Excuse me, sir. Yeah, please. Sir, I want to be work for agriculture sector after my graduation. What should I do? Please wait. I think the next speaker is going to talk to you about the agriculture sector and agri management. Thank you, sir. So please have patience. And after all of them complete the maybe we'll go for the question answer session, as rightly Dilip ji has told. Thank you very much. Okay, sir. Any question is most welcome for me. Thank you, Dr. Sahu. You have enlightened the students in a very right manner. You have this short time was probably a small time eye opener for them. Thank you so much, sir. Now the students, जेमती डॉक्टर साहू कहले जे जेमती चिराचरित ढंगरे पाठ पढिकरी आमे पीजी करिबा एमफिल करिबा पीएचडी करिबा तापरे हठात दिने लेक्चरर रहि जिबा भाबिते बहुत किछि तो जदियो लेक्चरर टा गोटे भलो जिंस लेक्चरर होवाटा बट देन हम डेफिनेटली सेटा प्लान कर नथिले हम खाली पाठ पढि चलिथिले भलो स्टूडेंट डिग्री केते मार्क आसीबो आ तापरे कोन पढि हेबो ना एबे whether it is a doctor or engineer industry एनजीओ भारतर अर्थनीति जदि 100% हुए ए सब तक मिसिकी होचंती बोधे 30 रु 35%, ताले बाकी 65 रु 70% पड़ गला, बाकी 65 रु 70% रोची हमर एग्रीकल्चर रे केना भारतर जीवन यापन शैली अर्थनीति संस्कृति जानी यात्रा सब निर्भर करछि एग्रीकल्चर ऊपर। मु टिके खाली गोटे मिनिट कहबी जेते आमे भी देखिछे आमे माने पाठ पढला बेले कहा पचांदे तो बापा कोन करचंती ना मो बापा क्लास अछंती, मो बापा इंजीनियर अछंती, मो बापा डॉक्टर अछंती, जहा बापा चाष करछंती से टिके धीरे करती मो बापा गां रे अछंती चाष करछंती सेरा गोटे गंभीर विषय जे चाष करछंती से ही जेते प्रकार प्रोफेशनल अछंती से समस्तक जीवन यापन निर्धारण से चाषीटी ही करूची। चाषी माने नुहे जेमती आमे पिला दिने बहिरे गोटे चित्र देखितु खोला देहरे लंगळ धरी चाषटी करूची। आपण माने न्यूज रे बडे बडे देखुथिबे वेब चैनल रे बडे बडे आसे जे अमेरिका रे सॉफ्टवेयर इंजीनियर थिले चाकरी छाडी आसी घुसुरी चाष करी लक्ष लक्ष टका कमाउछन, चाकरी छाडी आसी आखु चाष करी किंबा मक्का गुंड करी
किंबा कोरापुट रे पणस मंजी को सुखे गुंड करी ताको अमेजन रे बिकी के से कोटी कोटी टका इनकम करछ। आज आपण पाठ पढुचे व्यवसाय करछे जहा भी करछे माने सीधा सड़क किंबा मकेगिरी कहले शेष तार इन्फ्लुएंस होची जे आमे किछि रोजगार करिबा भल रहइबा सेटा होची अल्टीमेट जिनिस। जेमती आमे कहले चाष करिया माने न खाली लंगल करी चाष करिबा चाषटा गोटे बहुत बड़ इंडस्ट्री जोटा हम भारत परी गोटे उपमहादेश अप्रोक्सीमेटली 70% अर्थनीति प्रभावित करे। आपण माने जानिले आश्चर्य जबे मु जेतु मार्केट रे काम करछि गोडे जो वर्ष फसल अमल भल होई थाए सेही वर्ष मार्केट रे टीवी कंप्यूटर और फ्रिज अधिका बिक्री हुए। जो मासरे जो वर्ष गजा बोर्डी पड़ी थाए फसल भल हुए ना सेही वर्ष इलेक्ट्रॉनिक जिनिस और मोबाइल और लुगापटा भी कम बिक्री हुए। अर्थनीति को एते दूर पर्यंत एग्रीकल्चर प्रभावित करे। एबे हमें जो हम संगे असति डॉक्टर नटवर राउत से निजको एग्रो एंटरप्रेन्योर कहिबारे गर्वित अनुभव करंती। मु जति व्यक्तिगत जानि से जड़े जियो साइंटिस्ट से जड़े वैज्ञानिक किंतु से निज गोटे चाषी परिचय दियंती। से आत्मनियुक्ति नुहे से गुडा नियुक्ति सृष्टि करिसंती। से जोटी तकर गोटे छोट तकर आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस रखिसंती। आ से खाली जे निज पे चाष करछन सेमिति नुहे से वॉलंटरली भी गुडा लोक को से दियंती माने गाइडेंस दियंती दरकार ले मन को से जानती ताको बुझांती जे एया करो सेया करो। सो दिस इज द ओनली सेक्टर हमें जहां पाठ पढुचे पाठ पढि से हम चाकरी खोजिबा हमें बहुत भल भल पाठ पढिचे तेणु हमको के घर डाकी नहीं जाए हमें अप्लाई करिबा कोडी अपॉर्चुनिटी खोजिबा। बट देन एग्रीकल्चर इज सच एन इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर माने खाली चाष को सीमित करंतुनी पनीपरिबा फलमूल फूड प्रोसेसिंग वेजिटेबल प्रोसेसिंग पैकेजिंग ब्रांडिंग दैट इज ए ह्यूज इंडस्ट्री। और तापी गवर्नमेंट पैसा दैट इज द ओनली इंडस्ट्री ओनली सेक्टर जो थे सरकार पैसा दियंती और 50% पर्यंत छाड़ कर दियंती। इंडस्ट्री ए वंडरफुल इंडस्ट्री ऊपर डॉक्टर नटवर वर्तमान तांकर मतामत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर दिलीप भूया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पाढ़ी एवं आज हमर जो वक्ता थिले डॉक्टर शतपथी एंड डॉक्टर साहू। आज ये जो पदक्षेपटा नियाई मु धन्यवाद दउछि डॉक्टर पाढ़ी एवं मिस्टर दिलीप भूया को जे ओडिसा रे जनरल ग्रेजुएट मान पई ये जो अभिनव उपाय आमे काउंसलिंग करिबा यह जानि मु बहुत खुशी एवं ये काउंसलिंग फास्ट फेज 1 फेज रे हमर जो प्रथम थर करा जाउछि डॉक्टर शतपथी और डॉक्टर साहू बहुत बढ़िया भाव में प्रांजल भाव में आमर छात्र मान को बुझे कैरियर कौन आफ्टर ग्रेजुएशन साइंस आर्ट्स कॉमर्स जहाँ पढ़ला कौन मत बहुत जानी खुशी लगिला। डॉक्टर शतपथी ग्रेजुएशन पर हायर स्टडी उपर विशद भाव में आलोचना करछंती गवर्नमेंट सेक्टर जॉब एवं हायर एजुकेशन को लेकर स्टार्टअप इकोकल्चर इन इंडिया एंड इन ओडिशा बहुत प्रांजल भाव में से एवं डॉक्टर साहू तांकर मोटिवेशनल एवं तांकर लॉन्ग एक्सपीरियंस ओडिसा रे समस्त तांको जानती जने ट्रू एचआर कंसल्टेंट एवं कैरियर काउंसलिंग हिसाब रे आपन जो मोटिवेशन सब टिप्स दउतले सबठार भलो लागिला तांकर मजादार कथा। वी शुड वर्क विथ फेलियर्स आमे फेलियर ऊपर आमे बेसी नजर दबा दरकार आमे नजर दउले आमे जे 100% रखुची आमे ताली मार दउची जे फेल हे जाउची जे 40% 30% रखुची तांको पे एटा फोकस नाही जोटा को से एम्फासाइज करतले एवं मोर बंधु डॉक्टर भूया वर्तमान जो जिनसटा कहले जे एग्रीकल्चर रे जो स्कोप रही ओडिसा रही भारत वर्ष रही ता विषय में आम आलोचना करवा एवं ऑलरेडी डॉक्टर भूया मो विषय संक्षेप सूचना देइछंती एवं मोर प्रिय छात्र मान को आमर विभिन्न जिले जो माने जॉइन करिसंती मोर समस्त छात्र मान को मोर स्नेह एवं श्रद्धा एवं जेहेतु से आज बहु संख्यार जॉइन कर आग्रह रही तेणु मोर प्रिय छात्र मान को कहिबार अछि एठी आमे समस्त समान जे 100% रखुची लाइफ रे जहाँ भी करूना कहीं जने कम परसेंट रखिले मध्य से जीवन रे बहुत किछ करि परिबो एते निराश हबार नाही जोटा कि डॉक्टर शतपथी एवं डॉक्टर साहू प्रांजल भाव में बुझेई दैछन। तेणु करी हमर जो ट्रेडिशनल गोटे थिला 80-90% किए रखुतला आईएएस पाइला ओएस पाइला इंजीनियर होला डॉक्टर होला से जुग बदली गलानी आगे
मो अनुभूति कहबी मु जने कैरियर फर्स्ट क्लास स्टूडेंट पीएचडी करिछि साइंटिस्ट हेली किंतु मु 7-8 वर्ष तले देखिली जे मु जो गाँ रु आसीछि मो देश रे एग्रीकल्चर को लेकरी प्राय बा एग्रीकल्चर को गोटे इंडस्ट्री हिसाब रे एग्रीकल्चर को गोटे कैश क्रॉप बा गोटे भलो इकोनॉमिक रिटर्न हमरो युवक माने युवती माने पाइबे चासी पाइबे एटा आपण माने जानि छथि मु सेटा को मध्य अंगे लिभेई करी ठीक 7 वर्ष तले बोलई डॉक्टर साहू कहउतले आमे इनोवेटिव होबा दरकार डॉक्टर शतपथी से कथा कहले आमे इनोवेटिव आइडिया क्रिएट होबा दरकार मु ए बयस रे मध्य मु देखिली आइडियाटा कोउठ आसे आइडियाटा प्रॉब्लम रु आसे आइडियाटा जेतले इश्यू थाए आसे किछि समस्या थिले हमर आइडिया उत्पन्न हुए तेणु मो मुंडरे आसिला जे हमर भारत वर्ष बा ओडिशा एग्रीकल्चर जोटा को मोर बंधु कहले डॉक्टर भुइया जे 70% लोक एग्रीकल्चर रे एंगेज आइदर प्राइमरी प्रोडक्शन बा सेकेंडरी प्रोडक्शन प्राइमरी प्रोडक्शन आपण मान को बुझे दोची आमे जो धान चाष करूचे बिरी मुग चाष करूचे आखु चाष करूचे एतिक क्विंटल बा एतिक टन कले किंतु ताकू नै जेतबळे हमने धान रु चूड़ा करूचे मुड़ी करूचे आखरु गुड़ करूचे चीनी करूचे से भी गोटे गोटे इंडस्ट्री महू चाष आमे करूचे महू को जेतबळे आमे पैक करूचे अनि भी गोटे फार्मिंग आमे छतु चाष करूचे छतु को जेतबळे ड्राई करी बिकुचे पिकल करी बिकुचे सेटा सेकेंडरी आसीगला सिम्पली हमर एग्रीकल्चर एंड अलाइड रे आपनकर खाली एग्रीकल्चर राइस नुहे हमर ओडिसा रे जदी गोटे लोक को पचारिबो ते एग्रीकल्चर कोन ना भाई एग्रीकल्चर लॉस अरे एग्रीकल्चर धान मुग बिरी को बुझाय नै अनेक जिनिस रहिछि हम भारत वर्षर आपण माने जानि खुशी हेबे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हमर जो बड़ बड़ रिसर्च अनुष्ठान अछंती हम ओडिसा रे रहिछि सेंटर फॉर ट्यूबर क्रॉप रिसर्च सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर रिसर्च एग्रीकल्चर बा इकोनॉमिक हाई रिटर्न केमिति हबो कैश क्रॉप केमिति हेई परिबो 6 मास रे बिजुली फलिबो आपनकर कंदमूलर पाउडर केमिति आपनकर ये सब हेई परिबो नूडल्स हेई परिबो आपनकर फूड आइटम तयारी हेई परिबो वैल्यू एडिशन वर्तमान बाहर देश को वर्तमान एक्सपोर्ट कलेनी हमर चासी माने ओडिसा रो मध्य तेणु करी एटा गोटे भलो पदक्षेप होला साधारणतः आमे काउंसलिंग रे छात्र मान को केवल हायर स्टडी कोन करा जिवो छात्र माने अल्प बहुत आम ठार सुनिया पूर्व भी जानती एवं आजिकल डिजिटल टेक्नोलोजी रे छात्र माने बहुत एडवांस मध्य जे आमे बीए बीएससी पर कोन करू सेतर विभिन्न प्रकार वर्ग रे छात्र अछंती जो माने बहुत मार्क रखछंती जो माने मीडियम मार्क रखछंती जो माने कम मार्क तेणु मोर कहया कथा समग्र छात्र समाज को आमे समस्त समान ये अधिकार रखू ये कम रखू ये मध्यम रखू एग्रीकल्चर सेक्टर रे फास्ट अपॉर्चुनिटी रही जदियो मते आज 15 मिनिट दवा पई कुहाइछि समय के आमे आलोचना करिवा किंतु मु डायरेक्टर आईएमएस रो डॉक्टर पाढ़ी को मध्य कहितली डॉक्टर भुइया को मध्य कहिछि एटा होछि काउंसलिंग रो प्रथम दिन आ पर आमे फॉलो अप प्रोग्राम रखिबा जो थरे आपण देखु डॉक्टर शतपथी जते कहतले से कहले बहुत जिंस रहिछि कहया डॉक्टर साहब को बहुत जिंस रहिछि तो आज ये फोरम जे फास्ट आरंभ होछि तेणु मु अनुरोध करिबि आमर जो माने ऑर्गेनाइजर मान को समाने आउरी जेमति फॉलो अप रखिबे एवं स्टूडेंट मानकर जेहेतु गोटे डायरेक्टरेट एंट्री रहउछि जो स्टूडेंट मानकर जो रुचि रहिछि से आईएमएस रे हमर ए प्लेटफॉर्म को कांटेक्ट करिवे मु पर्सनली मध्ये स्टूडेंट मान को काउंसलिंग करिवि एवं मेंटर हिसाब रे गाइड करि परिवि जेमति हमर अन्य प्रवक्ता माने कहिछन तेणु मु संक्षेप रे कहूछि एग्रीकल्चर रे बा अलाइड सेक्टर रे एग्री अलाइड कथा मु कहूछि जदि आपण स्टार्टअप रे एंटरप्राइज करिया पय चाहउछंती ओडिसा रे पर्याप्त अपॉर्चुनिटी अछि मु मोर स्टार्टअप कथा को मु जेतल देखली एग्रीकल्चर रे एते इशू रहिछि मु ऑर्गेनिक फार्मिंग चूज कली क्लाइमेट रेजिलेंट मोर होला दिम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग बिना केमिकल रे केमिति चाष करि हो तेणु मु निजे गोटे जगह नै करी अडॉप्ट कली जोठी के आपनकर धान चाष हेई पारोनी बिरी मुग चाष हेई पारोनी जोठी कांकड़ा माटिया वेस्टलैंड सेठी मु कोन कली हॉर्टिकल्चरल क्रॉप करूची वेजिटेबल क्रॉप करूची आरोमा आपण जानिथिबे लेमन ग्रास हला हळदी हला आपनकर विभिन्न प्रकार रहिछि धन ये मिंट हला ए सब ड्राई लैंड हे परिबो मु मध्ये सेटा करूची मु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अछंती आपण माने छात्र मान को प्रकृति रे सब विषय रे हम अवगत करिवार अछि से माने जानतु कोठी कोन अपॉर्चुनिटी अछि तनो मु एई बड़ बड़ अनुष्ठान मानक सहित मिसिक रे फार्म रे जो काम कली मोर जो बेस्ट आउटपुट आसिला आजिका दिन मो पाखे टाटा सीएसआर ओडिसा रो बड़ बड़ एनजीओ माने फार्मर्स मान को पठे के ट्रेनिंग नउछि अपन देखो मो ऑब्जेक्टिव कली ऑर्गेनिक फार्मिंग करिया क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग सेतरे मु ओडिसा रे वर्तमान 5000 रु ऊर्ध्व मीडियम
एंड स्मॉल फार्मर मान को ट्रेनिंग देछि ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं से मान को सीड दउछि से मान को चारा दउछि को सीड को चारा न जोटा क्लाइमेट चेंज को सूट करिवो जोटा के ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रे जो प्रकार रही मु सेटा को आनिक अडॉप्ट करी मोर चाषी भाई मान को दउछि तेणु आ भीतर मध्य जे केवल जे चाष करूछ मो सहित सशक्त सेटा नुहे हमर जनरल ग्रेजुएट इरेस्पेक्टिव ऑफ एजुकेशन +2 +3 मो सहित इंजीनियरिंग ग्रेजुएट बहुत जोड़ी गले किए मशरूम चाष करूछंती किए नर्सरी आपण जानि थेबे आपण जो दुआर पिजुली गभा आईएचआर वेराइटी अछि गोटे पिजुली गछ 6 मास रे फल दबो तेणु आपण माने चिंता करंतु से चाराटार दाम केते हेतौ 150 टका रो कम नै आपणकर 365 दिन पोटल फळियो कुंदुरी फळियो अनेक प्रकार जिंस रहिछि हमर जनरल ग्रेजुएट मानको माइंड रे अंतत से चाष को आसंतु किबा चाष को न आसंतु किंतु चाष निश्चित भाव रे अधिका रोजगार देई परिबो जदि हमें भिन्न धरणर चाष करिवो तेणु आपण माने देखो मु ट्रेनिंग रो पैसा रोजगार करू मु चारा रो पैसा रोजगार करू आज ऑर्गेनिक फार्मिंग रे मु चारिटा जिला पे गवर्नमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर मिशन कंसल्टेंट अछि तेणु मु भी सेटु पैसा रोजगार करू जदि आपण कहिबे इनकम कथा कारण साधारणतः गोटे ग्रेजुएट माइंड थाए मु पास कला परे चाकरी कले मोर माने जोटा कहंती फूड सिक्यूरिटी बा फाइनेंशियल सिक्यूरिटी आसीबो किंतु थोड़ा हटके देखंतु आपण जदि उत्तर भारत देखिबे दक्षिण भारत देखिबे अधिकांश ग्रेजुएट एग्री अलाइड सेक्टर रे सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर काम कर आपण मानक भितरे जो माने इंटरेस्टेड बीएससी बीए बीकॉम पर मध्ये आपण चाहिले एमबीए एग्री मार्केटिंग ऊपर कोर्स करि परिबे आपण छोटो छोटो बेयर फुट एक्सपर्ट ऑन एग्री अलाइड आपण एलआई माने आपनकर डायरी ऊपर आपण ट्रेनिंग नै परिबे गोटे मास आपनकर बिजनेस स्टार्ट करि परिबे सर्विस सेक्टर बा सर्विस देई परिबे हेलो प्लीज कंटिन्यू तेणु आपण ओटती जोटा कहतले बहुत प्रकार बिजनेस आरंभ करी मध्ये आपन को मिली परिबो सहायता मिली परिबो तेणु आगामी दिन रे मु ए जो करियर काउंसलिंग रहउची जेतु समय बहुत कम आपण इंटरैक्टिव सेशन करबे मु खाली संक्षिप्त रे गोटे जिंस कहूची जेतु डॉक्टर सतपति मो संगे अछंती अछि आलोचना रे रविशंकर यूनिवर्सिटी रो मोर अनुभूति गोटे कहबी गोटे केस स्टडी कहबी 2014-15 मसिया रे रविशंकर यूनिवर्सिटी रो मते गोटे छोटो क्लास इंटरैक्टिव मोड रे डाकी थिले पिला मानक सहित इंटरेक्शन करिया पे गोटे क्वेश्चन पचारथिल पिला मान मु कहली आपण माने एमबीए एग्री मार्केटिंग करछु आपण एठु पास कला परे गोटे जे जदी एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज हला जदि हमर धान हेई परिबनी ए आपनकर बिरी मुग हेई परिबनी जनरल क्रॉप हेई परिबनी जिंद नंग दुर्भिक्ष समय हेइतला जल क्लिष्ट देखा जीवो आपण गोटे चिंता करंतु सेही समय आपण कोन करि परिबे आपण एमबीए एग्री मार्केटिंग करछंती आपण कृषि भाई मानक पई बा फूड सिक्यूरिटी ऊपर कोन कहते मो संक्षेप रे कहूची तीन जण स्टूडेंट हाथ टेकिले गोटे होचंती ताका ना पूजा चार्टर्ड अकाउंटेंट थिले आ जण होचंती कामदेव जे कि थिले एमएससी एग्रीकल्चर तीन जण कहले हम क्लाइमेट चेंज क्रॉपिंग ऊपर काम करबू से माने किछि दिन पर कहले जे मते जे हमें मुरिंगा ऊपर काम करबू आपण जानिते सजना सजना रो पाउडर आपण अमेज़न रे देखंतु तार 100 ग्राम रो दाम केते अछि से माने सेही जेहेतु समय कम रही मु टेस्ट टा कोची वेरी सक्सेसफुल मोर मेंटरिंग हेतला तीन जण स्टूडेंट मानक सहित एवं से माने सजना ऊपर पत्र को ड्राई करिक किंतु प्रोजेक्ट कले मो परवर्ती मुहूर्त रे कहबी एवं सेटा को से माने स्टार्ट अप कले एवं एमबीए एग्री मार्केटिंग कंप्लीट करिया पूर्व से माने गोटे फार्म तयार करतले 19 फार्म तीन जण संग मिसिकरी आज का दिन रे जोटा को मोर बंधु डॉक्टर भुइया कहउतले आत्मनिर्भरशील ऑन एग्रीकल्चर एमती अनेक मु आपन को उदाहरण भद्रक रु माने जॉइन करचंती आपन को भद्रक बालेश्वर बहुत सक्सेसफुल एग्री मास लाख टका पर्यंत इनकम कर परछंती तेणु समय स्वल्पता रही एग्री अलाइड सेक्टर रे जो छात्र माने चाहूचंती किछि कैरियर एवं स्टार्टअप करिया पई आत्मनिर्भरशील हेबा पई जे कोनोसी वृत्ति करि परिबे अनेक अपॉर्चुनिटी ओडिसा रे रहिछि
अनेक संस्था आपण मानकु सहायता जोगाई देबे आपण हायर एजुकेशन करि साइला पर मध्ये एतरे जोग देई परिबे तीन मोर बंधु कहतले वर्तमान बहुत आईटी सेक्टर प्रोफेशनल माने आसिकरी ऑर्गेनिक फार्मिंग करिबा एग्री सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऊपर काम करिबा ऊपर ऑलरेडी आसी जोग देई करी मासको लाख लाख टंका मध्ये रोजगार कर पारुछंती एवं तांका सहित से माने आउरी 10 15 20 30 लोकन को मध्ये ग्राम स्तर रे एवं शहर रे मध्ये 1 लाख से ग्रुप रहिछि इंटरेक्शन को जीवा कहि आपण मान धन्यवाद दउ थैंक यू डॉक्टर राउत आपण ए जो अनेक समय रे अनालोचित विषय वस्तु बसिया रहउतवा गोटे सेक्टर ऊपर आपण एत कथा कहले डेफिनेटली हम जानजु डॉक्टर अशोक भी जहा कहले डॉक्टर रवि भी जहा कहले कि डॉक्टर राउत जहा कहले सेवन डिजाइन फील्ड एक्सपर्ट्स अछंती आ ताकर कहया पे जणको जणे जति घंटाटे भी कहंती ताहे भी कम पड़िबो समय स्वल्पता हेतु हम ताको स्क्वीज कर देचे बट इट दिस सेशन वाज एन आई ओपनर वर्तमान हमें क्वेश्चंस गुडा छात्र छात्री प्रश्न पचारि हमें छात्र कहते जे मु ग्रेजुएशन करूची और ग्रेजुएशन पर बैंकिंग करबा को चाहूची डॉक्टर रवि शतपथी काइंडली गोटे शॉर्ट रिप्लाई दियंतु जने छात्र पचारि मु ग्रेजुएशन करूची ग्रेजुएशन पर मु बैंकिंग लाइन में जीवा को चाहूची अपन गोटे शॉर्ट रिप्लाई दियंतु there is a BFSI sector, BFSI, banking, finance and insurance sector. There is a skill development program. If we can do that, and after that, every bank and insurance sector are recognizing, he or she can have a great job on that. Okay, thank you. Dr. Ashok Sahu, बोधे एक क्वेश्चन आपन पे एप्रोप्रिएट हो जने छात्री पचारि जब ग्रेजुएशन करूचा ग्रेजुएशन पर इंटीरियर डिजाइनिंग रे कैरियर परस्यू करिया चाहूची ଗୋଟେ छोटो आंसर कर दियंतु तो इंटीरियर डिजाइनिंग रे भी आपण करियर परस्यू करि परिबे एवं देयर आर लॉट मेनी इंस्टीट्यूशंस आर देयर डिप्लोमा कोर्सेस आर देयर एवं 2 years courses are also there and you have to search in the web which is the right thing and which one you want to do एवं इंटीरियर डिजाइनिंग कर सरला परे आपण कोनसे जगह रे जॉब भी करि परिबे एवं आपणकर निजर भी सेटअप आपण करि परिबे निजर भी सेटअप करि परिबे एवं आई हैव सीन लॉट मेनी young boys one of my friends colleagues son is also doing and his wife is also doing and they are doing very well अपन ता बाहर भी अपन खाली इंटीरियर डिजाइनिंग ये रे भी अपन जदि अन्य even I tell you one of my personal experience is that my daughter she wanted to she told me that she was having a MBA after the BTech she was having an MBA then she wanted to have another MBA then she asked me that what do I do I told that okay you go for HR management finance management or marketing management like that then she told no I am going for a luxury management which was a new subject for me and she had gone and done something in luxury management that is again is a more or less a higher version of the interior designing and all these things which you can do it for the 5-star hotels big malls and all these things so very lucrative things are available for interior designing but you have to find out the appropriate diploma or the degree and you find out the right institution for your and how much time you can give and how much money you can spend. अच्छा जड़े छत्री अंजना ये दिलीप one more thing I want to add here there is a course master in design master in design in interior design सेटा भी specialization it's a great demand nowadays even NIFT is also doing sir National Institute of Fashion Technology they are doing छत्री आर्ट्स स्ट्रीम रो सजेशन दैछन्दी अंजना नायक जे आर्ट्स स्टूडेंट मानको पे गोटे अलगा सेशन हो अंजना आपण जानि रखथिबे ए जो सेशन ता थिला एक्चुअली एटा कोनोसी निर्दिष्ट स्ट्रीम को टारगेट कराइनी इन जनरल जेतो आपण माने विभिन्न कॉलेज रो आछथि साइंस कॉमर्स आर्ट्स विभिन्न स्ट्रीम अछथि तने इन जनरल हमर कहउला स्टिल खाली आर्ट्स में साइंस और इंजीनियरिंग को समस्त पे गोटे स्पेशलाइज सेशन हवाटा स्वागत योग्य
ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ संपर्क करंतु ସେମାନେ ऑर्गेनाइजर संगे जोगाजोग करिकि आपण मानक पे जदी हबो ओटे अलगा प्रोग्राम टे अरेंज कर दै परिबे। आउ जने छात्री पचारचंती पूजा रणा से कहचंती जे ग्रेजुएशन पर एग्रीकल्चर बिजनेस रे पसियाକୁ चाहूची। डॉक्टर राउत आपण ताको दीपद कहिबे या विषय जने छात्री से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पढु नांती से जनरल स्ट्रीम रे पढुचंती ग्रेजुएशन से एग्री बिजनेस रे पसियाକୁ चाहूचंती तेनो आपण टिके ताको छोट उत्तर दे परिबे। तेणु एग्री बिजनेस रे पसियाକୁ कहले आमर साधारणतः गोटे धारणा रही जो माने एमबीए एग्री मार्केटिंग करछंती बा जो माने बीएससी एग्रीकल्चर पढिचंती से माने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और मैनेजमेंट रे पसि परिबे। या बाद मध्य हम जनरल ग्रेजुएट से जेकोन से डिग्री रे हो से एग्रीकल्चर बिजनेस रे पसि परिबे। एग्रीकल्चर दुई प्रकार रहउची गोटे होची प्रोडक्शन ऊपर आपण काम करि परिबे जदि आपनकर जागा रही आपण डायरेक्ट फार्मिंग रे करि परिबे इंटीग्रेटेड फार्मिंग बा ऑर्गेनिक फार्मिंग कैश क्रॉप बा आरोमा फार्मिंग आपनकर मेडिसिनल प्लांट ऊपर रही एग्रीकल्चर कहले जे आपण मानको डिटेल आमे आ गोटे सेशन में जणै देबी। एग्रीकल्चर कहले आपनकर आमे भाबू जे धान चाष बिरिमुग चाष ना एटा ट्रेडिशनल वर्तमान जदि हमर एजुकेटेड पिला माने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो मैनेजमेंट बैकग्राउंड हो बीएससी आर्ट्स भी हो जदि चाहिए आपण एग्रीकल्चर पसिया मिनिमम ट्रेनिंग रो बा स्किल डेवलपमेंट रो आवश्यकता रही। ऑर्गेनिक फार्मिंग रे आपण को 1 मंथ ट्रेनिंग दिया जाय परिबो बा हमर राज्य रे नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग विभिन्न यूनिवर्सिटी एवं मोर जो गवेषणा केंद्र रही रिसर्च सेंटर मध्ये ऑर्गेनिक फार्मिंग हम कंडक्ट करूछु। गोटे जे चाहिबो एकर रु 2 एकर रे मध्ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग ऊपर आम ट्रेनिंग दे पारिबु एवं से आत्मनिर्भरशील हो पारिबे एवं सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऊपर मध्ये आपण एग्रीकल्चर डिफरेंट प्रोडक्ट नै करी आपण मार्केटिंग ऊपर काम करि पारे। तेणु अलाइड सेक्टर कहले एग्रीकल्चर आपनकर हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल डायरी भी आसुची आपनकर गो चाष आसुची आपनकर कुकुड़ा चाष आसुची बतक चाष आसुची हनी भी आसुची लॉट ऑफ जिंस आसुची। मु आपन गोटे कहबी भद्रकर जितु बिल्ली जने पिला से जस्ट पास करथिले मैट्रिक पास करथिले 40 लाख मशरूम ऊपर लोन नै करी से आज 200 लोकों को मशरूम चाष करैबा सहित एवं ताकर लोन सुजिकरी मध्ये वर्तमान मासको से 50 रु 60 हजार टका रोजगार करथि। आज सोलार से बसैछन सोलार ड्रायर बसैछन वर्तमान केते 5 वर्ष भीतर गोटे से बहुत गोटे बड़ लेवल अचीव करलेनी। अनेक आपनकर उदाहरण वर्तमान आसिलानी एग्रीकल्चर प्रति भिन्न रिजु नेलेनी। तेणु करी मु गोटे कथा कहया चाहूची हमर जनरल एजुकेशन वर्तमान जो ग्रेजुएट मान को दिया होची सेथरे आज जो स्वागतजोग पदक्षेप नेछि पिला माने एटी आग्रह प्रकाश करलेनी हम एग्रीकल्चर करिवु। तेणु एई जो टाइप रो कोन रहिछि इनोवेटिव आइडिया बा संभावना कोन रहिछि हमर छात्र छात्री माने कैरियर करि परिबे आत्मनिर्भरशील होई परिबे। एवं आपण जो क्वेश्चन टा पचारिसंती प्रिय छात्री जो हमर पचारिसंती आपण मध्य एग्रीकल्चर रे चाहिए विभिन्न सेक्टर ऊपर अछि आपण करि परिबे। आपण मोर नंबर रखंतु बा हमर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज रे रखंतु आपण जे चाहउचंती रियली इंटरेस्टेड हम आपण मान को गाइड करी। धन्यवाद। जने छात्र केमिस्ट्री ऑनर्स रे ग्रेजुएशन करूचंती से जस्ट प्रश्न पचारले जे मु केमिस्ट्री ऑनर्स पढुची सेटा सरिला परे एग्रीकल्चर सेक्टर रे सरकारी चाकरी चाहूची एटा मु एठी खाली पदक सारी दउची ए जो चाकरी आ सरकारी चाकरी खराब नहीं भलो किंतु ए जो कॉलेज सरकारी चाकरी ही करिवि सेटा मन रो पछि जांतु निजको गोटे मूल्यवान प्रोफेसर करी बढी तळंतु आपण भलो करिवे। जने जदि साइंस पढ़ी करी खराब करिवे आ जने आर्ट्स पढ़ी करी भलो करिवे ताले ताटू भलो कथा किछि नाही। माने साइंस पढ़ले भलो करिवो आर्ट्स पढ़ले खराब करिवो सेति किछि नाही। सरकारी चाकरी ही सुरक्षित अण सरकारी चाकरी बा बेसरकारी चाकरी सुरक्षित नुहे सेमति नुहे। आज हम जते जण कथा होचे आपण मान संगे डॉक्टर साहू होंतु डॉक्टर सपति डॉक्टर राउत मु निजे आमे के सरकारी चाकरी करेनी आई थिंक ठीक ठाक अच्छे। तेणु कैरियर प्लानिंग कला बेले सरकारी चाकरी पर गोटे जिनसा मुंडू पछिदा सजेस्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहू जड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पचारे जड़े स्टूडेंट जैसे ग्रेजुएशन पर म्यूजिक इंडस्ट्री में पशिया चाहते सो इट बिकम्स ए बिट ये जैसे गायक होगा चाहते कि ऑडियो प्रोडक्शन करने चाहते बोधे ऑडियो प्रोडक्शन कथा से करथुबे तो काइंडली दीपक कहबे। ओके इवन आपण भुवनेश्वर रे भी हमर अछि कोन सेटा
उत्कल संगीत महाविद्यालय अच्छी आपण जदि उत्कल संगीत महाविद्यालय को भी जीवा पे चाहउचंती आपण उत्कल संगीत महाविद्यालय रे जाके जॉइन करि परिबे। नंबर 2 हला आपण जे कोन से प्रोफेशनल सिंगर्स अछंती जो माने कि बहुत रिनाउंड सिंगर्स अछंती जहा पाखरु कि आपण सिखि परिबे एवं सिखि सारला परे आपण जदि निज ये रे किछि काम करिया पे चाहउचंती बर्तन लॉट ऑफ रियलिटी शोज आर चलानी एवं देयर यू हैव टू प्रूव योर टैलेंट एंड वंस यू प्रूव योर टैलेंट यू विल डेफिनेटली बी एप्रिशिएटेड एंड यू विल बी पिक्ड अप किंतु आपण जदि प्रथम गोटे ग्रेजुएशन करिया पे चाहउचंती हमर एटे भुवनेश्वर रे ही अछि जोटा कि उत्कल संगीत महाविद्यालय अछि सेमती बहुत जगह रे बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूशंस आर देयर एंड सो मेनी रिनाउंड सिंगर्स आर अवेलेबल dancers are available you can try your luck सो मु भाबुची अबे आजिकर सेशन टाकू जति हम प्लानिंग करछे ताकू अधिक समय नै गलेनी सो आउ जहा किछि छात्र छात्री को मन रे प्रश्न थाए कि आलोचना करिवार थाए दया करे निज निजर जोटी पाठ पढुछंती से कोटे संग संपर्क करंतु से माने जदी ए टाइप रो सेशन किबा फिजिकल इंटरैक्टिव सेशन अरेंज करे दी परिबे ताले बहुत भलो होता नहले आपण वर्तमान I can share my number if anybody wants to contact me for any advice also I am available for them डॉक्टर अशोक साहू नंबर कोन तो जदी मो एटे चैट बॉक्स रे लगे जे 7978 228353 and my email ID is also ने जो पिला मानकर आउ या परे ए डिस्कशन परे आउ कार किछि यदि डाउट्स अछि तो आमे तांको रिक्वेस्ट करबा जे से माने हमर जो मेल आईडी अछि जो मेल रे हम सहित कांटेक्ट से माने करथिले एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन हम जोथरे हम तांको डिटेल इंफॉर्मेशन देइथिले आज रे प्रोग्राम विषय सेथिरे मध्ये से हमकु डायरेक्ट मेल करि परिबे पुटिंग देयर डिटेल्स दैट मींस देयर नेम college and the subject they are having in that college and what are the queries they have we are here to reply them so now thanks to our speakers the resource persons including our moderators Sri Dilip Bhuya and now I request Dr. Gayatri Patnaik who is our academic program coordinator of IMS to officially propose vote of thanks. Dr. Gayatri Patnaik. Thank you, sir. Good afternoon to all of you. And we have a very nice and elaborate discussion on career counseling, though it was our first initiative on career counseling. So a lot of students, they have joined, they have asked questions and our resource persons are very extensively they share their experiences and what are the opportunities for the students after graduation or what they can do not only in graduation as they have discussed and matriculate also can what the matriculate can do they also very nicely they explain so we have Dr. Nataba Raut, Dr. Nataba Raut, the career counseling expert. And Sir has very extensively explained the opportunities available after class 3 and also focused on the very nice thing, very crucial aspect that what is the scenario after Corona, the COVID-19 pandemic and how we can sustain with this condition. And as we know that COVID-19 is not going to leave us. So what we will do and how can we pursue our career within that. And also he explained briefly on the higher education, what type of opportunity we can get in the higher education and also the startup concept, which is a very new concept. And students, definitely they will be benefited by the discussion of Dr. Ravinaran. I'm sorry. This is by Dr. Ravinaran. And Sir explained very nicely. Sir, thank you very much for giving us your valuable time and sharing your experiences with our students. And next we have Dr. Ashok Sahu. He explained as already Sri Dilip Bhuya
told that he is he's a motivational speaker and he motivates the students like anything. And he explained that what we have to do in career counseling and what are the 5 Ds: the desire, dream, dedication, direction, and discipline. So without these 5 Ds, we cannot achieve anything. So first of all, we have to know what is our capacity, what is our potential. Then only can we plan our career. So the key is that you must be very skilled to make yourself employable. So that doesn't mean that you are a good student, you scored 100% mark and you will get a good job. But you have to make yourself or fulfill the needs of the market. So as he explained the criteria for choosing your career, that you should choose a career that you love and you are good at, or you are expert in that field. Then only can your career, you'll be successful in your career planning. And as you know that you have your passion and design your career as per the need of the world. And he explained, he cited a case study of his friend son, how he explained that yoga, the demand of the yoga in the world. And he lastly he finalized his career in yoga. And Professor Natava Rao, he also explained very nicely that as we know that agriculture is our primary occupation, and most of after the ancient period, and we have an agrarian economy, and also now we are going back to that field again. So he focused on agriculture as he told that it is an entertaining activity, and 75% of the population, they engage in agriculture in primary and secondary level, and they focus in the opportunities available in the agricultural activity. So if anyone want to be self-dependable, self-employed, they can join the agricultural activities. And as he told that it is not the traditional agricultural pattern. There are a lot of things technologically we are technically developing, and more scientific approach is there now in agriculture. So each and every individual, they can be interested, they can join the agricultural activities. And as per the resources available and as per the talent we have, we must set our objective. We must focus our career in that aspect, that to be successful in future. So I'm very thankful to all our resource persons those who explained very nicely regarding the career opportunities. Nowadays, the career avenues are more. So we have a diversified occupational pattern, so we can select as per our interest, as per our potentiality. And I am very thankful to Sri Dilip Bhuiyan. He moderated the sessions very nicely, and our director, Professor Upendra Padi, for encouraging us to arrange this career counseling program, and our technical teams, Mr. Manoranjan Panda and Bhagalakshmi, Mr. Naik, and all the faculties like Raghunath Mandal, Suchita Mahanti, all they have contributed a lot for this successful career counseling program. So thank you all, thank you very much, and we are expecting your cooperation in the future collaboration also. Thank you.